Hello everyone, welcome to the world of Crack Academy. So guys, in today's session, we are going to start with 9th class Geography NCERT. And in today's session, I'm going to discuss with you two things, that is India's size and location and its physical features. So in the first segment of the session, I'm going to discuss with you the size and location of the India, its latitudinal and longitudinal extent, its position in the world, right? And in the second segment of the session, I am going to discuss with you the physical features of the India, that is the physiography of India, the various landforms that are found in India, right? So let's start with the first segment of the session, that is India's size and location. So guys, as you know, India is one of the ancient civilization of the world, right? It is one of the oldest civilizations, okay? And over the years, it has made remarkable socio-economic progress in various fields. Whether, for given example, agriculture, economics, right? Space, we have reached on moon, right? So we have achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades, right? And has made remarkable progress in the field of agriculture, right? चाहे वो agriculture हो, so we are the largest producers of rice, right? Industry, technology, overall economic development, right? So in various sectors we have made remarkable progress, right? And India has also contributed significantly to the making of world history. So India has also played a major role in making of world history also, right? So moving forward, so let's talk about India's position in the world, right? So India is basically located in the northern hemisphere. So this is your equator, ठीक है? कहां पर located है? In the northern hemisphere. और कौन से continent में located है? That is Asia, right? So this is the position of the world in the northern hemisphere, okay? Now locational settings, right? So if we talk about locational settings, अगर हम locational settings की बात करते हैं, it has, मैंने आपको बताया कि it is located in northern hemisphere. अगर एरिया की बात करते हैं, so it has got a total area of 3.28 million square kilometers, right? And north-south extent, that is from Ladakh to Kanyakumari, okay? How much it is? It is about 3214 kilometers, right? 3214 kilometers. And west to east extent is, that is from Kutch in Gujarat to here in Arunachal, right? It is 2933 kilometers, right? So north-south extent is greater than the east-west extent, right? Latitudinal settings की guys अगर हम बात करें, so India की latitudinal settings क्या हैं? Basically it stretches from 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north, right? So 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north, and since it is located in northern hemisphere, that's why we are denoting it with north, right? 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. ये तो हुई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात, ठीक है? अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? So basically it stretches from 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east. Understood? So this is the locational setting of India, right? So far so good. So let's talk about size. ठीक है, इंडिया के साइज के बारे में बात करते हैं कि हाउ इट वेरीज विद द अदर कंट्रीज, ठीक है? सो गाइज, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? इस आप डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, राइट? सो रशिया इज द लार्जेस्ट, उसके बाद कनाडा, आफ्टर दैट यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, right? So Russia has got the maximum area, right? So Russia at first,
Canada at second position, USA at third position, China at fourth position, Brazil at fifth, Australia at sixth position, and India as seventh. So this makes India the seventh largest country in the world, and it occupies about 2.4% of the total geographical area of the world. So India accounts about 2.4% of the world's total geographical area of the world, right? So this was about size, right? Now guys, you have heard about this line, right? The tropic, this latitude, that is the Tropic of Cancer, which is located at 23.5 degree north, or you can say 23.5 degree north. Okay. So it basically divides the India almost into two half. दो हाफ में डिवाइड कर देता है. इसके ऊपर आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, that will read in climate of India, right? And here you find tropical climate, right? And these are the states through which Tropic of Cancer passes. So you have Gujarat here, right? Rajasthan, Madhya Pradesh, okay? Chhattisgarh is there, Jharkhand, West Bengal, here you have Tripura, right? And this is your Mizoram, right? So these are the states through which Tropic of Cancer passes. Understood? Right? Now it has got an boundary of 15,200 kilometer, right? So total land boundary of India is what? 15,200 kilometer, and total length of India's coastline is 7,516.6. So that numbers come from by including Andaman Nicobar Islands and the Lakshadweep, right? So इन दोनों आइलैंड्स को मिलाने के बाद जो टोटल कोस्टलाइन का लेंथ बनता है इंडिया की, वो बनता है 7,516, that is 7,516, right? And the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Understood? From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. ठीक है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का क्या है? टाइम लैग है, राइट? सो हमने टाइम और लॉन्गिट्यूड को डिस्कस किया था कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूड बदलने से टाइम जो है बदलता चला जाता है, राइट? सो इट हैज गॉट अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. So to avoid that confusion of 2 hours, 82 degree 30 minutes east has been chosen as standard meridian for India, right? So to avoid any confusion in the local time, 82 degree 30 minute east has been chosen as the standard meridian of India, right? And from where it passes from Mirzapur, and it is located in Uttar Pradesh, right? So it passes from Mirzapur in Uttar Pradesh, right? Now the guys question arises that why is the difference between the durations of the day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir, right? So why you feel the duration between day and night, right? So that the duration is hardly between at Kanyakumari but not so in Kashmir. So guys, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया था, it is the curvature of the earth, right? So जैसे जैसे आप, तो बेसिकली इंडिया क्या करता है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ में लाई करता है, राइट? सो कन्याकुमारी इक्वेटर के ज्यादा पास है और कश्मीर ज्यादा दूर है, राइट? सो कन्याकुमारी पे जो रेज हैं दे आर मोर वर्टिकल इन रिलेशन इन कंपैरिजन टू कश्मीर, राइट? सो वहां पर डे लाइट क्या रहेगी, कन्याकुमारी पर ज्यादा देर के लिए रहेगी. सो डे लाइट वुड बी लॉन्गर एट कन्याकुमारी and it will keep on decreasing towards Kashmir. That's why the difference comes, right? So that's why there is a difference between the durations of the day and night hardly felt at Kanyakumari, but not so in Kashmir. So that is the reason.
So you have longer days at Kanyakumari, and the days get shorter as you move towards the north. And ultimately, when you reaches to the poles, so there is a 6 month of day or 6 month of night, right? Because of the curvature effect of the earth. ठीक है, जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो डे का ड्यूरेशन है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा. एंड ड्यू टू दिस लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, सो बेसिकली इट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट that influences the duration of day and night as one moves from south to north. So जैसे जैसे आप higher latitudes की तरफ बढ़ते जाएंगे, right, इक्वेटर से आप higher latitudes की तरफ बढ़ते जाएंगे, so the difference will keeps on changing, it will keeps on decreasing, right? Understood? Moving forward, guys, now let's talk about India and the world. राइट, सो बेसिकली गाइज अगर आप इंडिया की पोजीशन देखें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ मैप, राइट? सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इंडिया. सो अगर आप देखें तो इंडिया क्या है, जो ईस्ट और वेस्ट है उसके बीच में एक सेंट्रल लोकेशन पर लोकेटेड है. सो जितने भी ईस्टर्न ओशियानिक रूट्स हैं और वेस्टर्न ओशियानिक रूट्स में, राइट, दैट इज योर वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया. सो इंडिया इज acting at a central place. And it gives a strategic location to India. So India is basically at the crossroads of those international routes, right? And plays an important role in the international trade between the East Asia and the West Asia. So it acts as basically a bridge or a connecting link, right? So India landmass has a central location between the East and the West Asia, right? So basically it is a southwest extension of the Asian continent, right? So Indian subcontinent is basically the southwest extension of what? The Asian continent, right? And the very, the shape of the Indian coastline gives it a dominant position, ठीक है? So जो Indian coastline की shape है वो इंडिया को क्या देती है, एक dominant position देती है, कहां पर? Indian Ocean में. And it is the only ocean named after a country. So this is the influence which India exercise over Indian Ocean. So it is the only ocean named after a country, Indian Ocean, right? So the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic location to India, right? Since, as I discussed, India is at the central location, right? So east से आने वाले और west से आने वाले, so it acts as a basically a converging point for them, right? Now the question arises that India's contacts with the world have continued through ages, but our relationships throughout the land routes are much older than her maritime contacts. How? So basically हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि why the land routes are much older than the maritime sea routes, right? So basically guys, land routes काफी सालों से, आपने सिल्क रूट के बारे में सुना होगा, तो काफी सालों से हमारा लैंड ट्रेड है, इंटरनेशनल लैंड ट्रेड है, वो चला आ रहा था, राइट? सो इफ यू हैड हर्ड अबाउट द सिल्क रूट, राइट, सिल्क रूट के बारे में अगर आपने सुना होगा, इट पासेस थ्रू इंडिया, राइट? And the land route has continued much way before than the maritime international routes. And what were the significance of these routes basically? So guys, basically सबसे पहली बात, जो land routes थे वो easily accessible थे, right? जबकि maritime routes को accessible करना is not easy because of the climate, right? So they were more accessible to the land travelers, right? And what were the significance of these routes? Contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. So basically जो ट्रेड और कम्युनिटीज का एक्सचेंज होता था वो इन रूट्स के थ्रू पॉसिबल हो पाया, राइट?
even the ideas also got exchanged through these routes, right? So basically जब दो तरफ से आने वाले लोग एक दूसरे से मिलते थे तो they try to exchange their ideas. So when they talk with each other they try to exchange their ideas and views. ठीक है, तो वो अपने कल्चर के बारे में बता रहे थे और दूसरों के कल्चर के बारे में भी उनको जानने का मौका मिलता था. लाइक आइडियाज किस तरह तरीके के, जैसे उपनिषद में, राइट, द रामायण, द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र, the Indian numerals and the decimal system. So it is due to the presence of these roots that this knowledge is able to, this knowledge is being exchanged with the other parts of the world, right? So due to this, due to land roots, this became possible, right? And even the spices, muslin and other merchandise were taken from India through these land routes, right? So masalo ka trade, muslin, that is fine cotton, it is exported throughout the world through these routes, right? And Indian cotton was known, had a name, huge name in the world cotton market, right? On the other hand, ठीक है, बाहर की कंट्री से क्या क्या चीजें आती थी? So we got the influence of Greek sculpture, right? That the Indo-Greek school, right? उसके बारे में आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो Indo-Greek school was the result of the culmination of Indian and Greece school and the architecture styles of dome and minarets, right? The Islamic architecture from West Asia. So basically in land routes के जरिए ना केवल आइडियाज एक्सचेंज हुए लेकिन साथ ही साथ कई तरह की कमोडिटीज भी एक्सचेंज हुई, राइट? सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रूट्स. अंडरस्टूड? मूविंग फॉरवर्ड गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज नेबर्स. इंडियाज के नेबर्स की अब बात करते हैं, हमारे पड़ोसी की, राइट? एंड देयर इज अ सेइंग दैट यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर neighbors, right? So having a good neighbors is a essential thing, right? So basically अगर सबसे पहले हम land laborers की बात करते हैं, ठीक है? Land, so which are connected by, connected to India via land, right? So अगर आप मैप ये देख पा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है अफगानिस्तान, right? You have Afghanistan, then is your Pakistan, right? First, second. Here you have China. Fourth is Nepal. ठीक है? Fifth is Bhutan, right? China is there. Nepal, Bhutan. और कौन सा होगा? बांग्लादेश, राइट? सो दिस इज बांग्लादेश, ठीक है? दिस इज म्यांमार. सो दीज आर योर लैंड नेबर्स, राइट? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, right? So to remember this, you can remember this Bachpan MBA. Bachpan MBA, right? B से क्या आ जाएगा? बांग्लादेश, राइट? CH से चाइना, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, M से म्यांमार, राइट? B से बांग्लादेश, राइट? बचपन MBA. सो सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ, ठीक है? बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो लगता है, राइट? टच होता है, ठीक है? तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ. अंडरस्टूड? Right? And next is of China, and N is here for Nepal, right? N is here for Nepal. So the mnemonic is Bachpan MBA, right? So that you can remember the order of the boundaries, international boundaries. So BA से
बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री है इंडिया के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड लास्ट में अफगानिस्तान। अंडरस्टूड? सो ये तो हुई लैंड नेबर्स की बात। और अगर हम मैरीटाइम नेबर्स की बात करें या सी नेबर्स की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा श्रीलंका, राइट। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो, राइट। एंड अनदर नेबर विच इज साउथ ऑफ लक्षद्वीप इज मालदीव्स, ठीक है। यहां आ गया मालदीव्स, राइट। एंड दीज आर योर आइलैंड्स, दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दीज आर पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, लक्षद्वीप, राइट। So these are your sea neighbors or maritime neighbors. Understood? And see, Pak state separates India from Sri Lanka. Okay, the state that separates India from Sri Lanka is Pak state. Understood? So these are the guys political and administrative boundaries of India. So how many states we have got? We have got 28 states, right? And how many union territories? 8 union territories. So union territories are administered by the center, right? So starting from north, we have J&K, right? Ladakh, चंडीगढ़, ठीक है। जे&के आ गया, लद्दाख आ गया, चंडीगढ़ आ गया, ठीक है, न्यू दिल्ली, राइट। सो अब हम वेस्ट पे आ जाते हैं। यू हैव दमन एंड दीव एंड दादर, सो दे हैव बीन मर्ज्ड, राइट। और कौन सी यूनियन टेरिटरी हमारे पास? वी हैव पुदुचेरी, राइट। हियर वी हैव पुदुचेरी एंड सम पोर्शन ऑफ पुदुचेरी हियर, राइट। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड 8th इज लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारी, ठीक है। दैट इज जे&के, लद्दाख, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, राइट। सो बेसिकली अगर आप इसकी बात करते हैं कोस्ट की, वेस्ट कोस्ट पे, तो कौन कौन सी आ गई? दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। तो ये अब एक ही बन चुकी हैं, पहले ये सेपरेट थी, राइट। सो यू हैव ऑल्सो some portion of Puducherry, that is Mahe, right, and Lakshadweep. So you have got 3 UTs on the western coast, right? वहीं अगर हम वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, so we've got Andaman and Nicobar Islands, Yanam, right, Karaikal, right? So these are what part of Puducherry, Yanam and Karaikal. So Puducherry के Mahe, Yanam and Karaikal, these are the 3 parts, 3 divisions of Puducherry. So Mahe is located on the western coast, whereas the 2 other divisions, that is Yanam and Karaikal, is located on the east coast, right? So this is the location of the UTs on the eastern and the western coast, right guys? आगे बढ़ते हैं, right? So I have answered the first question here. The number of union territories along the western and eastern coast, right? Area wise, which is the smallest and which is the largest state, right? So this is a homework for you. Find it out, right? The states which do not have international border or lie on the coast, right? So now try to find out the states which do not have an international border, right? And they lie on coast. So Gujarat touches Pakistan. So, but it is a coastal state. But the question has been asked that the states which do not have an international border, right? But Gujarat has got international border. ठीक है? गुजरात का क्या है? International border है, right? So
स्टार्टिंग महाराष्ट्र वुड बी देयर, राइट, फिर गोवा आ जाएगा, उसके बाद कर्नाटक आ जाएगा, फिर केरला आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल नहीं आएगा। वेस्ट बंगाल क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट टचेस विद बांग्लादेश, राइट। इवन त्रिपुरा एंड मिजोरम, दीज आर नॉट कोस्टल स्टेट, दीज आर लैंडलॉक्ड स्टेट्स, ठीक है। सो कौन कौन सी स्टेट्स होगी? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राइट। So these are the states which are coastal states but do not share international border with any of the countries, right? What was the next question? So classify the states into 4 groups, each having common frontiers with, right? So हमने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ फाइंड आउट करना है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं, ठीक है। तो गाइस पाकिस्तान के साथ कौन कौन लगती है? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इज देयर, राइट, सॉरी पंजाब इज देयर, राजस्थान एंड गुजरात। सो 1 2 3 4, राइट, सिंस लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर इज अ UT now, so there are 1 2 3 states and 2 UTs that touches border with Pakistan, right? तो ये तो बात हुई पाकिस्तान की। नेक्स्ट था चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट लगती है गाइस? सो यू हैव JNK एंड लद्दाख, ओके, लद्दाख UT, राइट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राइट, सिक्किम एंड योर अरुणाचल प्रदेश। सो दीज आर द स्टेट दैट टचेस बॉर्डर विद चाइना, ओके। म्यांमार के साथ देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर म्यांमार। सो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश इज देयर, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, राइट। सो दीज आर द स्टेट दैट टचेस, यू नो, दैट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार, ठीक है, जिनका म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है, राइट। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। अब चेक करते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं, राइट। सो फर्स्ट इज योर West Bengal here, right? Second is Assam, Meghalaya, right? Tripura and Mizoram, right? So these are the states 1 2 3 4 5, 5 states that touches border with Bangladesh. Understood? Clear हो गया? Just note them down, ठीक है? Moving forward. So guys, before 1947, this was the map of India. So there were some provinces that were ruled by the British India and some were princely states. So जो आपको येलो कलर से हाईलाइट होते दिख रहे हैं वो क्या है? These are British administered territories of India, right? So they were under the direct control of the British, right? And in blue you have princely states, that is Rajputana, Ajmer, Mewar is there, Gwalior is there, Gujarat, that is Junagadh, right? Mysore is there, Hyderabad, one of the largest princely states in India, right? Here you have Travancore, right? Madras, right? Manipur, right? Khasi states. So, and even Jammu and Kashmir. So, these all were princely states of India. That is before 1947. But after 1947, they were merged with Union of India, right? Now some question answers for you, right? The tropic of Cancer does not pass through, right? The tropic of Cancer does not pass through. तो guys क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान, ओडिशा, Chhattisgarh या Tripura. So it passes through Rajasthan also, it passes through Chhattisgarh also, it passes through Tripura also. So Odisha would be the right answer, right? The easternmost longitude of India is, क्या होगा इसका आंसर? Is it 97 degree, 68 degree, 77 or 82 degree? So the easternmost is 97 degree 25 minutes east, right? So A would be the right answer. Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim have common frontiers with, see, this is your tropic of Cancer, right? And
they have talked about Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, right? बिहार, वेस्ट बंगाल, राइट? ठीक है, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल. सो ये किसके साथ बॉर्डर है इनका? हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद whom? नेपाल. सी, उत्तराखंड टचेस नेपाल, राइट? उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश, राइट, एंड सिक्किम. सो दे ऑल टचेस नेपाल. ठीक है, so right answer would be Nepal. Understood? So next question is, guys, if you intend to visit कावरती during your summer vacations, ठीक है, आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कावरती जाते हैं, ठीक है, which one of the following union territories you going to visit? ठीक है, so guys, आप किस यूनियन टेरिटरी में विजिट करेंगे? लक्षद्वीप. ठीक है, बिकॉज कावरती जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है, राइट? सो राइट आंसर वुड बी लक्षद्वीप, राइट? ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, राइट? दमन एंड दीव की सिल्वासा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री व्हिच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया. So he is basically saying it does not share land boundary with India. So कौन सी कंट्री होगी? भूटान touches, right? Bangladesh is also our land neighbor. Nepal is also our land neighbor. So Tajikistan will be the right answer. So his friend hails from Tajikistan. Understood? So these were some of the questions from your first chapter, right? Now let's start with second chapter or the second segment of the session, that is physical features of India. So guys, इस सेशन में मैं आपके साथ फिजियोग्राफी इंडिया की कैसी है, किस तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, we have mountains, we have plains, right? So we will discuss about all those things. ठीक है, so start करते हैं guys. So India has got, guys, huge variety of land. So you have mountains here, you have deserts here, you have plains here, right? So almost every kind of physical landform is present in India, and you can see every type of landform in India. So India has got a huge variety of landforms, right? So you've got mountains, plains, desert, plateaus and islands. You have got पहाड़ हैं आपके पास, मैदान हैं, deserts हैं, ठीक है, plateaus जिनको आप पठार कहते हैं, and islands. ठीक है, तो ये सारे के सारे लैंडफॉर्म्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, राइट? एंड अगर आप जियोलॉजिकली बात करें, ठीक है, सो पेनिनसुलर प्लेटू जो है, इट इज वन ऑफ द एनिशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस, राइट? इट इज वन ऑफ द एनिशियंट एंड रेलिक लैंड मास ऑन द अर्थ surface. I am talking about geologically, right? Whereas if you talk about Himalayas are the still in the process of formation, right? And they are still relatively young than the peninsular landmass, right? And that's why the peninsular plateau has got the most stable land blocks, right? And it is composed of igneous and metamorphic rocks. So peninsular plateau किससे बना हुआ है? Igneous and metamorphic rocks, right? And it is characterized by valleys and plateaus, right? Whereas if you talk about Himalayas and northern plains, these are the more recent landforms, okay? So from the viewpoint of geology, right? Himalayan mountains form an unstable zone. So that's why आपने अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि हिमालयन बेल्ट में आपको अक्सर अर्थक्विक्स अकर होने की न्यूज आती है, राइट? सो आपने अक्सर वहां पर अर्थक्विक इंसिडेंट्स के बारे में सुना होगा, ठीक है? बिकॉज दे आर जियोलॉजिकली वेरी एक्टिव. द इंडियन प्लेट इज स्टिल converging, right? So they represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. So आप Himalayan rivers के बारे में जब पढ़ेंगे तो they are flowing in gorges, they have deep valleys, right? They are still active in headward erosion, right? They are still in their youthful state. ठीक है, तो जो हिमालयाज हैं आपको अभी भी क्या है, वो रिलेटिवली यंग हैं. दे हैव गॉट अ रिलेटिवली यंगर टोपोग्राफी और रिलीफ,
राइट? यहां तक समझ में आ गया? नाउ लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, सो गाइज ये मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हिमालयन, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स, राइट? देन यू हैव नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, the Indian desert, Thar desert, right? The coastal plains, and last is the island. So these are the six major physiographic divisions of India. Now I am going to discuss with you them one by one, right? So let's start with Himalayan mountains. So guys, as I told you, Himalayan mountains क्या है? Geologically they are still young and in the active process of formation. They are still forming, right? The convergence is still happening. The plates are still moving, right? So it is geologically young and structurally fold mountains, right? So Himalayas are young fold mountains. So these are basically formed due to the folding, right? So the rock strata, right, have been folded, right? And that's why these are called fold mountains. So mountains की भी guys types होती हैं. You have folded mountains, you have block mountains. जब हम mountains के बारे में discuss करेंगे तो then I'll discuss the types of mountains, right? And they run in a west to east direction from Indus to Brahmaputra, right? From Indus to Brahmaputra, right? So अगर आप देखें ऐसी एक आर्क शेप है, एक बो शेप में ये एक्सटेंड कर रहे हैं. So they are wider in the west and narrower in the east. वेस्ट में जो इनकी विड्थ है वो ज्यादा है और ईस्ट में पहुंचते पहुंचते ये सिकुड़ते चले जाते हैं, नैरो डाउन होते चले जाते हैं, राइट? एंड दे बेसिकली फॉर्म एन आर्क. सी दिस इज एन आर्क. सो बेसिकली पैरेलल रेंजेस हैं. ठीक है, ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, लोअर हिमालयस, ये डिफरेंट डिविजन्स हैं. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है, सो वेस्ट में क्या है? वेस्ट में दे आर ब्रॉड एंड ईस्ट में जाते जाते दे गेट नैरो, राइट? एंड बेसिकली गाइज इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 kilometers, right? And in their width in west is 400 kilometers. As I said, they are wider in the west, 400 kilometers in the west and 150 kilometers in Arunachal Pradesh, right? So this has been the extent of Himalayas, right? So they have also got altitudinal variations. ठीक है, तो कई पीक्स जो हैं वो 6000 मीटर हैं, उससे भी ऊंची हैं. कई जगह पे आपको 3500 to 4500 मीटर्स की भी पीक मिलेंगी. एंड यू हैव ऑल्सो लो lying mountains or low mountains which are the Shivaliks, right? In which the height ranges from 1000 to 1500 meters, right? And this basically guys consists of 3 parallel ranges, right? So basically Himalayas consist of 3 parallel ranges, right? So this is your the Great Himalayan range. This is your Trans Himalayan range, right? And here you have Middle Himalayas, right? और उसके बाद शिवालिक्स. तो ये पैरेलल रेंजेस में हिमालयस क्या है? अरेंज्ड हैं. ठीक है, सो दे आर यंग folded mountains and in parallel form, right? And geologically active, right? So अब guys बात करते हैं पहली रेंज की, दैट इज हिमाद्री, जिसको आप ग्रेट हिमालयन रेंज या ग्रेट हिमालयास भी कहते हैं. ठीक है, हिमाद्री भी कहा जाता है. एंड guys this is the most continuous range, right? And it consists of the highest peaks of the world, like Mount Everest is there, Annapurna, Nanda Devi, Kanchenjunga, right? So it boasts of the highest peaks, right? And height varies from 6000 meters. So average height is 6000 meters of the Great Himalayan range, right? And the folds of Great Himalayas are asymmetrical in nature, right? अब इसकी कोर किससे बनी हुई है? इसकी कोर ग्रेनाइट से बनी हुई है. सो ग्रेट हिमालयन की जो कोर है वो किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट से बनी हुई है. एंड बेसिकली दीज आर स्नो कवर्ड पीक्स. सो थ्रू आउट द ईयर दे आर कवर्ड थ्रू स्नो, बिकॉज इतने ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे हैं कि वहां पर स्नो जो है हमेशा इंटैक्ट रहती है. ठीक है, और कई तरह के आपको ग्लेशियर्स भी यहां देखने को मिलेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, यू हैव बाराशिगरी ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, छोटा शिगरी ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश,
So these two glaciers you found in Himachal Pradesh. Then you have Gangotri, that is the source of Ganga river, Yamunotri, source of Yamuna river, Satopant, Pindari, Kamet and Milam. So these all glaciers are in Great Himalayan Range but found in the states of Uttarakhand. Right? अगर आप नेपाल की बात करें, so you have Khumbu glacier, Khumbu icefall very famous, Nogzumpa glacier, Imja glacier, Ambulapcha glacier, right? So these are not very significant because they lies in Nepal. So you need to concentrate on the glaciers which are found in India. Then you have Zim glacier in Sikkim. ठीक है, अगर आप अरुणाचल की बात करें, you have Bichong glacier, Kangpo glacier and Axol glacier. Understood? Please note down.